we and you. So first of all, we will have to know the meaning of what is I, what is you, and what is we. So what is the meaning of I? I यानी कि मैं. Now, whenever you are describing yourself, you have to use I. When you have to use I, whenever you are describing yourself. जब भी मैं अपने बारे में बात करूं, तब मुझे क्या यूज करना है? I. Now, along with I have to put always am. Now, if someone asks you, who are you? Who are you? यानी कि आप कौन है? तो आपको जवाब में क्या देना है? आपका नाम. You have to give your name. So you have to answer with I am and your name, and my name is Harsh, so I have to use I am Harsh. Is that clear? Whenever you are describing yourself, you have to use I, and along with I, what you have to use? आपको साथ में क्या यूज करना है? Am. And always remember, whenever you are using I, you have to write it in capital. Okay? You cannot write in a small letter. So always use capital I. Is that clear to you? You have to use capital I, and along with I, what you have to use? I am. So you have to use am. And after that, what you have to say? Your name. I am her. So whenever you describe yourself, you have to use I. That you understood? And you have to say I am her. And then you can say in which class you are studying. Then what I have to say? अगर आपको कोई पूछे कि आप कौन सी क्लास में हैं, तो आपको क्या जवाब देना है? फिर से मैं यानी कि I am studying in which standard you are studying? First standard. So whenever you are describing yourself, you have to use I. And likewise here also what can I use? I am studying in first standard. Okay? Now in food, what you love to eat? What you love to eat? Ice cream? Now if someone asks you, what do you love to eat? यानी कि आपको सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? तो आपको क्या जवाब देना है? I love ice cream. Is that what you like? I love ice cream. Okay? So whenever you are describing about yourself, you have to use I am. And whenever you are describing about yourself, that is your hobby, you like to draw, you like to eat something, then you have to remove am. आपको क्या निकालना है? am. So अगर am आपको निकाल लोगे, तो उसमें से क्या रहेगा? I love ice cream. Now we will learn when to use we. सबसे पहले वी का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है? वी का मतलब हम.
So whenever you are describing or talking about yourself only, what you have to use? I. And whenever you are in a group and you are talking not about just yourself but about others also, then you have to use we. जब भी आप अपने अकेले के बारे में नहीं लेकिन सबके बारे में बात कर रहे हो तब आपको क्या यूज करना है? we. So it shows togetherness कि आप लोग साथ में हैं. Now what we used with am, do you remember? We used I am, so we use am with I. Okay, is it clear? Now with we have to use are. Now जब भी आप अपने अकेले के बारे में बात नहीं कर रहे हो, whenever you are not talking about just yourself, you are talking about many people, and that is a plural. क्योंकि आप एक नहीं लेकिन एक से ज्यादा हो, तब आपको क्या यूज करना है? are, यानी we are. ठीक है? I के साथ क्या यूज करना है? We have to use am with I and we have to use are with we. So we are. Now, if someone asks you what you all are doing, आप सब लोग क्या कर रहे हैं? Now what is asked here? What all you are doing? आप सब लोग क्या कर रहे हो? यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही है. It is not just about yourself. If it is about yourself, you have to use I. But here we are talking about more than one people. यानी कि कई लोगों की बात हो रही है जिसका आप हिस्सा है. तो आप उसको क्या आंसर देंगे? What you are doing? आप क्या कर रहे हो उसका क्या आंसर देंगे आप? आप सब लोग को खेलना पसंद है, ठीक है? सही है ना? So we will answer with we are playing. So what we use with we use are. So whenever you are talking about not just yourself but about your group, जब भी आप अपने अकेले के बारे में बात नहीं लेकिन आप जिस ग्रुप का हिस्सा हो इसके बारे में बात कर रहे हो, तब आपको क्या यूज करना है? We are. So what you are all doing means आप क्या कर रहे हो उसका आपने क्या जवाब दिया? We are playing. So we have to use are with we always. Now we will come to the use of you. Use of you. Now what is the meaning of you? यानी कि meaning of you हिंदी में होता है आप. यानी कि whenever you are talking about someone or someone other person, you have to use you. Talking about other person. So when we use that, when we are talking about ourselves, जब भी मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, then we will use I. अब आप we कब यूज करोगे? जैसा कि मैंने कहा, जब आप किसी ग्रुप में हो और आप अपने अकेले के बारे में बात नहीं लेकिन you are talking about your group as a unit, then we have to use we. And when we have to use you, whenever you are talking about someone else and that person is in front of you, यानी कि वो पर्सन आपके सामने हो, तब आपको क्या करेंगे? You. So talking about other person, okay? And likewise, we have used am with I, are with we, and what we'll use here?
Same like we will use are. So what if someone asks you that what, अगर आपको किसी से ये पूछना है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम यानी कि यू यानी कि आप, तो व्हाट यू विल से, व्हाट यू आर डूइंग यानी कि आप क्या कर रहे हो। आपका आपकी जगह में क्या यूज किया इंग्लिश में, यू। So remember, whenever you are talking about some other person and you are directly talking to them, आप सीधा ही किसी से बात कर रहे हो, तब आप उसको क्या करके पूरा पुकारेंगे, you, what you are doing यानी कि आप क्या कर रहे हो, या क्या बोल रहे हो, आप सामने वाले को पूछ रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हो। Now if I ask you what you are doing यानी कि आप क्या कर रहे हो, तो अब आप क्या कर रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, सही ना। तो what you will say here now when I use you it means कि आप क्या कर रहे हो। और अब आप क्या बोलोगे, अपने बारे में बोलोगे। अगर मुझे कोई पूछे कि what you are doing, so what will I answer, I am recording a video यानी कि मैं अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, whenever you are talking about yourself you have to use I, remember, so you will answer with what you are doing, so the answer will be I am watching video। So हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट वी यूज यू यानी कि आप क्या कर रहे हो, ये आपसे पूछ रहा है। तो ना व्हाट यू विल आंसर विथ, यू हैव टू आंसर विथ व्हाट यू आर डूइंग मींस अब आप क्या करोगे, यू विल डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ यानी कि अब मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने बारे में डिस्क्राइब करूँगा दैट आई एम watching video। So what I did here, I describe what I am doing। So what I am doing here, I am watching video। And what was asked, what you are doing, क्योंकि मैंने अपने आप से तो नहीं पूछा था, मैंने किसको पूछा था, सामने वाले को, what you are doing। और सामने वाला person, the other person to whom I am asking will answer with I am watching video। Is that clear? So whenever you are asked a question, you have to change you with I am, okay? So now as you all know what is the meaning of I, we and you, we will exercise it, we will do exercise so that you can know more about how to use it practically, कि आप इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, अभी आप सब लोगों को क्या देना है, आंसर। मैं फिल इन द ब्लैंक्स लिखूंगा, आपको आंसर देना है उसको। यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चन। द फर्स्ट fill in the blanks is blank then am running। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको I, we और you इन तीनों में से सिर्फ एक को चुनना है। You have to choose one and you have to put it in the blank। So blank am running। So यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई दौड़ रहा है, running means कि दौड़ना। Now what I said about I, we and you, we have to use I with am। And what I have written here, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, m लिखा है, तो यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा आएगा, it will be not you because you have to write you with I।
we with I. But what is the answer of this sentence? I. Why? Because we have to use am with I. So what we will write here? Now you can answer. We will write I am running. So मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दौड़ रहा हूँ. So remember, as I said, we have to use I with am. Without am, we cannot use I. And in which letter I have written this? In capital letter. Okay? I cannot write small letter. Okay? You cannot write small I whenever you are describing yourself. So you have to write capital I. So now, the second question. Now you have to answer what is the suppose if I ask you what you all are doing, as I asked before कि आप सब लोग क्या कर रहे हो, तो आप सब लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा है playing. आप सब लोग खेल रहे हो, you all are playing. So what I will use here, I can be used only when I'm describing yourself. लेकिन आप यहाँ पे अकेले की बात तो नहीं कर रहे हो, आप ग्रुप की बात कर रहे हो, तो I we will not use. Then we will come to we. Now whenever we use we, whenever we are in a group and we are not just talking about ourselves but about a whole group. अब मैं पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे we, और लास्ट में आता है you, यानी कि मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ कि what you are doing. So we cannot use I, we cannot use you also. Why? Because what I asked you, what you all are doing. आप सब लोग क्या कर रहे हो? सब लोग की जगह हमको क्या यूज करना है इंग्लिश में? We have to use we. So what we will write here? We are playing. So what we use here? We are playing. Okay? Now the third example. आप में से कौन कौन क्रिकेट खेलता है? खेलते हो ना? ठीक है. तो what I have written here, playing them love to play cricket. क्रिकेट खेलना पसंद है. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या खेलना पसंद है, तब आप क्या बोलेंगे? Love to play cricket. Now what we have to use here again? Now in this sentence we can use three of that: I, we and you. Why? I can write here I love to play cricket. Then I also can use we love to play cricket, and I also can use you. यहाँ पे तीनों क्यों आ सकते हैं? क्योंकि do not have to use am, are or are, any of them. So I love to play cricket. मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो वो भी करेक्ट हुआ सेंटेंस. अब नेक्स्ट मैंने क्या यूज किया? we love to play cricket. हम सब लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो वो भी करेक्ट हुआ. अब नेक्स्ट इज व्हाट? you, यानी कि मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ. You love to play cricket, यानी कि तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, तो तीनों सेंटेंस करेक्ट हुए. In this situation, you can write three of them. Any of you can choose: I, we, or you.
So now we will do one more exercise. Okay, this is the last one exercise. So now if I want to ask you कि आपको दौड़ना आता है, you like to draw, right? So मैं आपको पूछूं कि आपको दौड़ना आता है. So what I am doing here, I am talking or asking you. So I have to use here you. Can you draw? यानी कि आपको दौड़ना आता है, तो पेंट करना आता है, ठीक है. सो यहाँ पे what did I ask you? Can you draw? Because to whom I am asking to you. मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ? मैं आपको पूछ रहा हूँ. That's why I use you, because I am not talking about myself, but what I am talking about you, yourself. So what did I use here? I use you. Can you draw? So now you have to answer. If you cannot draw, what you have to say? Now, as I say here, I am asking not about myself, but I am asking to you. मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ. That's why I use you. Now, whenever you will answer me that you can draw or you cannot draw, कि आपको draw करना आता है या नहीं, what you are doing? You are describing yourself. So what I say, whenever you are describing yourself, you have to use I. So what I will write here? I cannot draw. मैंने क्या पूछा पहले? Can you draw? And then what I answered with? I cannot draw. यानी कि आप draw नहीं कर सकते. I cannot draw. So what I used here? I instead of you. So whenever someone asks you a question about yourself, you have to use not you, but you have to use I with capital letter. Now, if you want to ask कि आप मुझे सिखा सकते हो क्योंकि आपको दौड़ना नहीं आता, आपको ड्रॉ करना नहीं आता, then how you have to ask someone a question? You have to answer I cannot draw. Can you teach me? So now you are asking me because you cannot draw. आपको draw करना तो नहीं आता. So what you will do? You will ask me that can you teach me? आप मुझसे क्या पूछोगे कि आप सिखा सकते हो मुझे how to draw? So what I used here you, because you are not describing yourself but you are asking a question to me. So you are describing. Can you teach me? Now, जैसा कि आपने यहाँ पे मुझे पूछा कि can you teach me, कि मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, तो then what I have to answer with this question, can you teach me? I will answer I can teach you. So I used I and you both. Why? Because I can teach. मैं यानी कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ. I am talking about myself. That's why I used here first of all I with capital letter. I can teach. मैं सिखा सकता हूँ. लेकिन किसकी बात हो रही है? मुझे किसको सिखाना है? To whom I will teach you. That's why I can teach you. मैं आपको सिखा सकता हूँ. आपको यानी कि you, because I will teach you. That's why I write here. I wrote here I
कैन टीच यू, यानी यू यानी कि मैं आपको सिखा सकता हूँ। इज दैट क्लियर? सो it was the lesson about how to use I, we and you, and now you can learn with yourself. Thank you.